Hari Om. Pranams to our Puja Gurudev and salutations to everyone gathered here. On this auspicious day, with a divine aura, I would like to start with our Gurudev's quote to brief about our Vidyalaya. Education is nothing if it does not train our faculties to capture all our opportunities to be useful to others but stay happy always in ourselves. True to this quote, the Chinmaya Vidyalayas serve the purpose of imparting education as envisaged by our Gurudev. Our Vidyalaya at Avadi is a well-established educational institution following the CBSE curriculum. Children hail from heterogeneous background and our Vidyalaya strives to strike at a balance between curriculum and co-curriculum. By and large, the children are benefited by value-based education, that is the CVP. The CVP is the USP of Chinmaya Vidyalayas. Our school was gloriously incepted on 19th June 2011 by His Holiness Swami Mitrananda Ji. Since then, the school has witnessed consistent growth both in quality and in quality. From a humble beginning of 35 students, we are 1,400 presently. The school has got both secondary and senior secondary affiliation, and now it is Chinmaya Vidyalaya Senior Secondary School VGN Avadi. Our first set of 12 students passed out this year. Over the years, we have been producing 100% results with the blessings of our Gurudev. We dedicate all our achievements at the lotus feet of our Gurudev and strive on with the motto, unto him our best. To commence our today's program on the 13th chapter of Bhagavad Gita, let's invoke the Almighty. உலகத்தின் உயிர்களை படைத்தபடி அப்படைப்பினை திருமால் காத்தபடி உலகத்தின் உயிர்களை படைத்தபடி அப்படைப்பினை திருமால் காத்தபடி அண்டம் பகிரண்டம் அதை காக்கும் அவன் கோதண்டம் பின்னையும் உலகையும் அளக்கும் அவ்வாமணி பாதம் அண்டம் பகிரண்டம் அதை ஆகும் அவன் கோதண்டம் பின்னையும் உலகையும் அளக்கும் அவ்வாமணி பாதம் ஹரி 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 என தினம் ஸ்மரி ஹரி 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 என தினம் ஸ்மரி நான் வணங்கிடும் இறைவனோ சங்கு சக்கரதாரி என் நெஞ்சில் பள்ளி கொன்றவன் ஸ்ரீரங்கநாயகன் என் நெஞ்சில் பள்ளி கொண்டவன் திருப்பதியில் எழுந்தருளும் திருமாலும் நீ உன் திருமார்பில் அமர்ந்திருப்பது பத்மாவதி தாயே திருப்பதியில் எழுந்தருளும் திருமாலும் நீ உன் திருமார்பில் அமர்ந்திருப்பது பத்மாவதி
ஆதிதாயே உடுப்பிலே தவழ்கின்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நீ உன்னருள் வேண்டி நிற்கின்றேன் நான் உந்தன் சேயே உடுப்பிலே தவழ்கின்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நீ உன்னருள் வேண்டி நிற்கின்றேன் நான் உந்தன் சேயே நெறியையும் அறவழியையும் எம குணதா பல அவதாரம் எடுத்தாய் எடுத்துரைத்தாய் அதுவே வாழ்வின் ஆதாரம் நெறியையும் அறவழியையும் எம குணதா பல அவதாரம் எடுத்தாய் எடுத்துரைத்தாய் அதுவே வாழ்வின் ஆதாரம் அருள் தரும் தேவா வரம் தரவாவா அருள் தரும் தேவா வரம் தரவாவா மூவுலகையும் ஆளுகின்ற திருவிக்ரம ரூபா என் நெஞ்சில் பள்ளி கொண்டவன் ஸ்ரீரங்கநாயகன் என் நெஞ்சில் பள்ளி கொண்டவன் Let the divinity prevail. The Swaranjali team will lead us into the Guru Paduka Puja, followed by Ashtotra Namavali performed by the leaders of our Vidyalaya, culminated by the Chinmaya Aarti. Guru Stotram. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यशाश्वतशान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पतः गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरुर्परमदैवतं गुरुर्परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव Now let's invoke Lord Ganesha. Gently tap on your forehead. Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vignopashantaye. Now place your left hand on your right lap. Take some flowers on your right hand and place it on your left hand. Now let's chant Sankalpa. Om Namo Pata Samasta Duridakshayadvara Shri Parameshwara Prityartam Asmin Shubhamuhurte Jnana Seva Kaushala Siddhyartam Shri Guru Prasada Siddhyartam Cha Shri Guru Paduka Pujam Karishye. Om Ajaya Namaha Om Avyayaya Namaha Om Avinashine Namaha Om Achintyaya Namaha Om Aprameyaya Namaha Om Advitiyaya Namaha Om Maniketaya Namaha Om Anushasana Priyaya Namaha Om Antasakshine Namaha Om Antaryamine Namaha Om Anandaya Namaha Om Atmaswarupaya Namaha Om Manglabhasha Viduktamaya Namaha Om Ishwaraya Namaha Om Mudara Hridayaya Namaha Om Utsahavardhakaya Namaha Om Ekasmai Namaha Om Onkara Vide Namaha Om Karuna Sagaraya Namaha Om Karma Parayanaya Namaha Om Kalatitaya Namaha Om Kaivalya Swarupaya Namaha Om Kridatmane Namaha Om Kridakrityaya Namaha Om Gita Jnana Yajna Pracharakaya Namaha Om Gurave Namaha Om Gunatitaya Namaha Om Grandhakrite Namaha Om Chinmayaya Namaha Om Chinna Samshayaya Namaha Om Jagadatmane Namaha Om Jagat Sakshine Namaha Om Janapriyaya Namaha Om Jitendriyaya Namaha Om Jiva Brahmaikya Vide Namaha Om Jivan Muktaya Namaha Om Jina Mandirodharakaya Namaha Om Tapovana Shishyaya Namaha Om Tapasvine Namaha Om Tapanashanaya Namaha Om Titaswarupaya Namaha Om Tejasvine Namaha Om Dehaditaya Namaha Om Dvandvaditaya Namaha Om Dhridanishchayaya Namaha Om Dharma Samstapakaya Namaha Om Dhimate Namaha Om Dhiraya Namaha Om Dhairya Pradaya Namaha Om Narayanaya Namaha Om Nijanandaya Namaha Om Nirapekshaya Namaha Om Nisprihaya Namaha Om Nirupamaya Namaha Om Nirvikalpaya Namaha Om Nityaya Namaha Om Niranjanaya Namaha Om Paramaya Namaha Om Parabrahmane Namaha Om Bhavanaya Namaha Om Pavakaya Namaha Om Purushottamaya Namaha Om Prasannatmane Namaha Om Falashakti Rahitaya Namaha Om Bahubhaktaya Namaha Om Bandhamochakaya Namaha Om Brahmanishtaya Namaha Om Brahmaparaya Namaha Om Bhayanashanaya Namaha
ॐ भारतगौरवाय नमः ॐ भूम्ने नमः ॐ महावाक्योपदेशकाय नमः ॐ महर्षये नमः ॐ मधुरस्वभावाय नमः ॐ मनोहराय नमः ॐ महात्मने नमः ॐ मेधाविने नमः ॐ यदात्मने नमः ॐ यज्ञकृते नमः ॐ लोकप्रसिद्धाय नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ विभवे नमः ॐ विनोदप्रियाय नमः ॐ विनयशीलाय नमः ॐ वीतरागाय नमः ॐ वेदान्तवेद्याय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ शान्तिप्रदाय नमः ॐ शास्त्रोद्धारकाय नमः ॐ शुद्धसत्त्वाय नमः ॐ श्रुतिपारगाय नमः ॐ श्रोत्रियाय नमः ॐ सन्न्यासिने नमः ॐ समबुद्धये नमः ॐ सच्चिदानन्दाय नमः ॐ सर्वहितचिन्तकाय नमः ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ॐ सन्तुष्टाय नमः ॐ साधवे नमः ॐ सुमनसे नमः ॐ सुहृदे नमः ॐ स्वयं ज्योतिषे नमः ॐ स्थितप्रज्ञाय नमः ॐ क्षमाशीलाय नमः ॐ ज्ञानमूर्तये नमः ॐ ज्ञानयोगिने नमः ॐ ज्ञानतृप्ताय नमः ॐ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपाय नमः ॐ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपाय नमः ॐ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपाय नमः ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः. Now let's offer the Naivedhya. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओं. आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की दिव्य रूप मूर्ति करुणा की. आरती सद्गुरु की. चरणों में उनके शांति समाये शरणागत की भ्रांति मिटाए पापदाप संताप हरण की. आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की. आरती सद्गुरु की. वेद उपनिषद गीता को गाया धर्म सनातन फिर
आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। सिद्ध बारी की तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे, भक्त हृदय आनंद स्रोत की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की। दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। बोलिए सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Now, let's watch a clipping from our Gurudev's talk. Very, very fundamental truth. You and I cannot exist in this world and function without the environment. The subject in you cannot function with a world of objects around. There where the dream and its plurality are available, there alone you can function as a dreamer. There where the dream has disappeared, the dreamer cannot exist. After waking up, you can't be a dreamer. You have realized that I who thought myself to be the dreamer is myself the waker. The subject depends upon the world of objects. That is why in deep sleep, when there are no world of objects perceived by the body or felt by the mind or thought of by the intellect, there in deep sleep you don't also exist. You, the son of your father, you don't exist in deep sleep. Why? There are no objects. This subject-object relationship, which maintains this fantastic world of delusory misconceptions, is being brought into the dissecting table. And like a precious research scholar and a scientist, Krishna is dissecting it properly. And you and I are looking at the table, the dissection, over his shoulders, and understanding the mechanism by which this delusory misconception of a world of plurality, and that we are caught up in it, we can't come out of it, this stupid notion in you have risen, have embodied itself, has stemmed forth. The source of that ignorance is pointed out.
ever a pliant reed in the hands of the eternal flute player, said our Gurudev, Swami Chinmayananda. Hari Om. Today, Chinmaya Vidyalaya, VGN Avadi is here to present the essence of the 13th chapter of Bhagavad Gita, the Kshetra Kshetrajna Yoga, which will lead us into the Moksha Marga. Moksha, you said. Moksha is freedom, right? Freedom from what? Freedom from dukkha in the three realms, that is Adi Bhautika, those miseries which are caused to us by other beings of this world. Adi Devika, these are natural calamities like floods and hurricanes which cause unfathomable suffering to millions across the globe. Adhyatmika, the pain one experiences due to the wrong working of one's own mind and the body. That is very fascinating. But how is that possible? Can you please elaborate? Through the right understanding of the Kshetra, the field of activity, and the Kshetrajna, the knower of the field. To get a better clarity, watch the dramatic presentation, a dream plot between God and a girl, Paru, who gets an insight into the 13th chapter, the Kshetra and Kshetrajna Vibhaga Yoga. Paru? Paru, I know that a number of questions bombard your mind these days. I am here to help you out. All you have to do is just answer my questions genuinely. You will get what you're looking for. Really? I know it is the divine voice. I'm so excited to interact with you. To start with, tell me, who are you? I am Paru, Parvati Kannan to be precise. That's just your name. Tell me who you are. I was born on 15 July 1998 and now I am 24 years old, 5.5 feet tall, 50 kgs by weight. You are defining your body. Just think, if anything untoward happens to your hands, legs or some parts, will you still be there? Yes, you are right. I am not this body. So tell me who you are. I am sad, irritable and confused. This is what I am presently. These are the emotions that affect you. How can they be you? Tell me who you are. Yes, you are right. I am not this mind. I am a doctorate in philosophy and the 60 crore company CEO. Paru, you are still not into the groove. That's your qualification and job status. These are definitely not you. Tell me who you are. You are right. They are not me. What are they then? What is the relationship between what is me and what is not me? Now you are on the right track of inquiry. इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. This body is termed as Kshetra, the field of activities, and one who knows this body is called Kshetrajna, the knower of the field. Okay, I understand the meaning of Kshetra and Kshetrajna. Can you please tell me more about Kshetrajnas? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ञानं मतं मम. Know me as the knower of the field in all fields, and the knowledge of the Kshetra and the Kshetrajna is the real knowledge according to me. I am there in all fields and all fields are there in me. I am the universal one, the supreme. Close your eyes, Paru, and visualize the Rasalila dance.
Be attentive and come along with me through a meditative journey. I will elucidate who a Kshetrajna is. Hope your understanding is better about Kshetra and Kshetrajna. Now let's take a step further and envisage the personified gunas or qualities required to be transformed into a Kshetrajna. A Kshetrajna is a person who possesses all the 20 gunas. Here come certain people and characters within your familiarity personifying one guna each. Amanitva, humility, Dr. Abdul Kalam. Amanitva, humility, Dr. Abdul Kalam, a perfect murti of humility. He lived when he was at Rameswaram, even at Rashtrapati Bhavan. Non-violence.
Who else could be a better example for ahimsa other than Sibi Chakravarti, who sacrificed his own flesh to save a pigeon? Forbearance. Mother Earth, she bears everything with poise and patience. That's why we remember her in the morning before stepping down. Padasparsha Shamaswame. Arjavam, straightforwardness. Bharatiyar was straightforward in his speech, thought and actions, and that's why his writings overflow with inspiration. Acharyopasanam, service to the Guru. Arjuna took Krishna as his Guru and offered himself as Guru Dakshina to fight against adharma. Saucham, cleanliness of body and mind. Mother Ganga, the epitome of purity, in spite of millions washing their dirt of their mind and body in her. Stairyam, steadfastness. Bhagirath should have been steadfast and determined while bringing Ganges to the earth. He never lost his heart in spite of the greatest hardships. Atma Vinigraha, self-control. Bhishma sacrificed his own life to keep up his promise for the throne of Hastinapura. He is remembered for his pratignya, Bhishma Pratignya. Indriyateshu Vairagyam, dispassion toward objects of the senses. Tapovan Maharaj would not accept any gift from outsiders, exhibited the perfect Vairagyam needed on the path of spirituality. Anahankaraha, absence of egoism. Bharata ruled Ayodhya from Nandigram, placing Rama's Padukas on the throne. Wow, what a quality of egolessness. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, Dukkha Doshanu Darshanam,
Swami Shivanandaji, not only a physical doctor but a spiritual doctor as well, who guided our Gurudev. Asaktihi, non-attachment. Khudiram Bose, he lived Bhagavad Gita. He was least bothered to give up his body at the gallows for the independence of Bharat. Anabhishvangaha Putradara Grihadishu, absence of attachment on children, spouse and home. Kuchela, when asked what he wanted, he had forgotten his poor family and stayed mesmerized in the presence of Krishna. Nityam cha samachittatvam, ishtanistopapatishu. Even-mindedness amid pleasant and unpleasant events. Adoni, Captain Cool, ever cool and poised in all situations. Mai Ananya Yogena Avyabhicharini Bhaktihi, constant and unalloyed devotion to me. Upper, he kept chanting the name of Shiva and sang Devaram throughout, no matter what the trouble was. Vivikta Desha Sevitvam, inclination for solitary places. Dhruva, at the age of 6, definitely knew the importance of a solitary place, which is a must on the spiritual path, and he did obtain the darshan of Lord Vishnu. Janasansadi Aratihi, aversion for mundane society. Ramana Maharishi walked out of his house to reach Tiruvannamalai, where he was enlightened. Adhyatma Jnana Nityatvam, constancy in spiritual knowledge. Nachiketas, who wanted to know about self, although he was persuaded to wish for material things, and Yama was forced to bless him with self-knowledge. Tattvajnanat darshanam, perception of the goal of spiritual principles. Swami Vivekananda was brave enough to ask his guru if he had seen God and was it possible for him to show God. And Sri Ramakrishna Paramahamsa gave him the grace of spirituality.
Swami Chinmayananda was one unique person who possessed all the 20 gunas and is undoubtedly a Kshetrajna and one who took the holy scriptures to the common man. गुरुदेव तव महनीय कथा मेरे जीवन का अवलंबन है. Paru, your doubts are gradually evading, and a serenity takes over your mind. Your understanding about the qualities of a Kshetrajna is clear now. Also know that बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्. He is present outside and inside all living beings, those that are moving and not moving. He is subtle and hence he is incomprehensible. He is very far but he is also very near. Paru, not able to comprehend? Let's take a quick time travel back to the 1990s. ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः. ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः. ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः. ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः. Do you know why I like motakam? Because it's sweet? No. What is inside the motakam? Purnam, Swamiji. What do you mean by Purnam? Being complete? Yes, complete. Complete is that state which pervades everything, and that is Purnam. So, try to be Purnam. What is being Purnam, Swamiji? Did you attend my Jnana Yajna on Kshetrajna Yoga? I had told that subtle always pervades the grass, and that is तथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते. just as space pervades the other elements and is not touched, Purnam or Kshetrajna pervades the creation and doesn't touch. Just like the electrical equipment needed current for their functioning, Kshetrajna is needed for the functioning of Kshetra. Just as water pervades the waves, Kshetrajna pervades the creation, and that is Purnam. Understand? Yes, Swamiji. Thank you for being exponential. Hari Om, Swamiji. Paru, you had been receptive all this while and have comprehended that Kshetrajna pervades the Kshetra. Also, Kshetra ceases to exist. That is, Kshetra is mortal, whereas Kshetrajna is immortal. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. Those who perceive the eyes of knowledge, the difference between the body and the knower of the body, and the process of release from material nature, attain the supreme destination. Come on, my child, dissolve into me like how an ice cube loses itself into a glass of water. Union of Prakriti, the basic cosmic material, and Purusha, governing life and reality.
शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कररारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नामेरा Buddhi is the first and subtlest evolute of Prakriti at the individual level. Ahankara. It is the principle of individuation. Mahabhutas, 5 fundamental elements. Space, Akash. Fire, Agni. Water, Jal. Air, Vayu. Earth, Bhumi. Mahabhutas. Jnanendriyas, the tools for gaining the knowledge of Atma and Manas. They are nose, ears, eyes, tongue and skin. Karmendriyas, instruments of action. Legs, hands,
tells speech. Manas synthesizes the sense data into determinate perceptions. Panchatanmatras are the five perception or subtle elements that are the object of the five senses: touch, sound, sight, smell and taste. With God's grace, they collapse back. Grace is the antidote to illusion. रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः. Just as a dancing girl ceases to dance after having exhibited herself to the spectators, so also the Prakriti ceases to operate after having exhibited herself to Purusha. Paru? Paru, now tell me, who are you? Mano buddhya hankara chittani naham na cha shrota jivye na cha grana netre na cha vyoma bhume na tejo na vayu chidananda rupam shivoham shivoham. I am not the mind, the intellect or the ego. I am not the ears, eyes, nose or the skin. I am not the space, earth, fire, water or wind. I am the form of consciousness and bliss. I am the eternal Shiva. Paru was raw, undefined and unpolished when God interacted with her first. But God had taken time to lead her through certain levels, enabling her gain glorious lesson at each level. Paru, by surrendering herself completely to God, understood that Kshetra and Kshetrajna are not the same. Kshetra is mortal and Kshetrajna is immortal. It is by possessing the 20 Gunas that one gets transformed into a Kshetrajna. Subtle, that is Kshetrajna, pervades. The gross, that is Kshetra. And finally, only Kshetrajna prevails.
Thank you all for watching our show. Hope all of us have learned the valuable lessons of life and got our queries answered along with Paru. Let's grow with Gita, glorify Gita, and ultimately glow with Gita. Hari Om. Coming up next is the bhajans performed by the Swaranjali team of Chinmaya Vidyalaya, VGN Avadi. स्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गम गम गणपति गम गम गणपति गम गणपतये नमः। गम गम गणपति गम गम गणपति गम गणपतये नमः। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय श्री गणेशाय नमः। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय श्री गणेशाय नमः। रत्नवर्णाय शूलसूक्ष्माय लम्बोदराय नमः। रत्नवर्णाय शूलसूक्ष्माय लम्बोदराय नमः। बुद्धिप्रदाय सिद्धिनाथाय पादहस्ताय नमः। बुद्धिप्रदाय सिद्धिनाथाय पादहस्ताय नमः। नमः गम गम गणपति गम गम गणपति गम गणपतये नमः। गम गम गणपति गम गम गणपति गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। विघ्न विनायक मूर्ति की जय। कंदवडी वेला मुरुगा कंद उमै बाला। कंदवडी वेला मुरुगा कंद उमै बाला। सन्नन पोट्टळगा मुरुगा तमरे पूवळगा। सन्नन पोट्टळगा मुरुगा तमरे पूवळगा। வெள்ளி வெள்ளழகா முருகா விபூதி பொட்டழகா। வெள்ளி வெள்ளழகா முருகா விபூதி பொட்டழகா। புலிமயிலழகா முருகா வலிப்புழத்தழகா। புலிமயிலழகா முருகா வலிப்புழத்தழகா। அறுபடையுடையாய் முருகா ஆனந்தம் தந்திடுவாய்। அறுபடையுடையாய் முருகா ஆனந்தம் தந்திடுவாய்। ஆறு தலையுடையாய் முருகா ஆறுதல் தந்திடுவாய்। ஆறு தலையுடையாய் முருகா ஆறுதல் தந்திடுவாய்। அருமுகத்துடனே வந்து எங்கள் இடர்கள் தித்திடுவாய்। அருமுகத்துடனே வந்து எங்கள் இடர்கள் தித்திடுவாய்। அனைவரும் போற்றும் தெய்வம் எங்கள் ஆண்டவன் நீதானையா। அனைவரும் போற்றும் தெய்வம் எங்கள் ஆண்டவன் நீதானையா। காவி உடையழகா முருகா கஸ்தூரி பொட்டழகா। காவி உடையழகா முருகா கஸ்தூரி பொட்டழகா। சேவக்கொடி அழகா முருகா சிந்துர பொட்டழகா। சேவக்கொடி அழகா முருகா சிந்துர பொட்டழகா। வலிதேவானையுடன் மயில் மேல் நடனமாடி வரும்। வலிதேவானையுடன் மயில் மேல் நடனமாடி வரும்। கடவுள் உந்தனை போல் முருகா கண்கண்ட தெய்வம் உண்டோ। கடவுள் உந்தனை போல் முருகா கண்கண்ட தெய்வம் உண்டோ। கந்தவடி வேலா முருகா கந்த உமை பாலா। கந்தவடி வேலா முருகா கந்த உமை பாலா। சந்தன பொட்டழகா முருகா தமரை பூவழகா। சந்தன பொட்டழகா முருகா தமரை பூவழகா। வெள்ளி வெள்ளழகா முருகா விபூதி பொட்டழகா। வெள்ளி வெள்ளழகா முருகா விபூதி பொட்டழகா। புலிமயிலழகா முருகா வலிப்புழத்தழகா। புலிமயிலழகா முருகா வலிப்புழத்தழகா।
அறுபடையுடையாய் முருகா ஆனந்தம் தந்திடுவாய், அறுபடையுடையாய் முருகா ஆனந்தம் தந்திடுவாய், ஆறு தலையுடையாய் முருகா ஆறுதல் தந்திடுவாய், ஆறு தலையுடையாய் முருகா ஆறுதல் தந்திடுவாய், அறுமுகத்துடனே வந்து எங்கள் இடர் கத்தித்திடுவாய், அறுமுகத்துடனே வந்து எங்கள் இடர் கத்தித்திடுவாய், அனைவரும் போற்றும் தெய்வம் எங்கள் அடவணி நனையா, அனைவரும் போற்றும் தெய்வம் எங்கள் அடவணி நனையா, காவியுடைய அழகா முருகா கஸ்தூரி பொட்டழகா, காவியுடைய அழகா முருகா கஸ்தூரி பொட்டழகா, சேவக்கொடி அழகா முருகா சிந்துர பொட்டழகா, சேவக்கொடி அழகா முருகா சிந்துர பொட்டழகா, வலிதேவானையுடன் மயில் மேல் நடனமாடி வரும், வலிதேவானையுடன் மயில் மேல் நடனமாடி வரும், கடவுளுந்தனை போல் முருகா கண்கண்ட தெய்வம் உண்டோ, கடவுளுந்தனை போல் முருகா கண்கண்ட தெய்வம் உண்டோ, கண்கண்ட தெய்வம் உண்டோ, கண்கண்ட தெய்வம் உண்டோ. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா. शङ्करा चन्द्रशेखरा गङ्गाधरा सुमनोहरा, शङ्करा चन्द्रशेखरा गङ्गाधरा सुमनोहरा, पाहि मां परमेश्वरा मृत्युञ्जय विश्वेश्वरा, पाहि मां परमेश्वरा मृत्युञ्जय विश्वेश्वरा, शङ्करा चन्द्रशेखरा गङ्गाधरा सुमनोहरा, शङ्करा चन्द्रशेखरा गङ्गाधरा सुमनोहरा, पाहि मां परमेश्वरा मृत्युञ्जय विश्वेश्वरा, पाहि मां परमेश्वरा मृत्युञ्जय विश्वेश्वरा, नीलकण्ठा बालनेत्र भस्मभूषित सुन्दरा, पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा, पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा, नीलकण्ठा पालनेत्र भस्मभूषित सुन्दरा, नीलकण्ठा पालनेत्र भस्मभूषित सुन्दरा, पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा, पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा, शङ्करा चन्द्रशेखरा गङ्गाधरा सुमनोहरा, शङ्करा चन्द्रशेखरा गङ्गाधरा सुमनोहरा, पाहि मां परमेश्वरा मृत्युञ्जय विश्वेश्वरा, पाहि मां परमेश्वरा मृत्युञ्जय विश्वेश्वरा, ताण्डव प्रिय जय नटेश विश्वनाथ महेश्वरा, ताण्डव प्रिय जय नटेश विश्वनाथ महेश्वरा, पाहि मां अभयङ्करा ज्ञान शर्मा वरदरा, पाहि मां अभयङ्करा ज्ञान शर्मा वरदरा, ताण्डव प्रिय जय नटेश विश्वनाथ महेश्वरा,
पार्वतीपतये हर हर महादेव नमः नमामि गुरुवर तव शरणं तव शरणं तव शरणं नमामि गुरुवर तव शरणं तव शरणं तव शरणं भागीरथी से प्रेरण पाकर उत्तर हिम से हे परमेश्वर भागीरथी से प्रेरण पाकर उत्तर हिम से हे परमेश्वर तुझको पूजे हे पुरुषोत्तम तुझको पूजे हे पुरुषोत्तम तुझे पुकारे श्री गुरुदेव तुझको पूजे हे पुरुषोत्तम तुझे पुकारे श्री गुरुदेव सरि ग गरि ग प प ग प नि नि प नि स स गरि सरि सनि सनि प ग नि प गरि सरि नमामि गुरुवर तव शरणं तव शरणं तव शरणं नमामि गुरुवर तव शरणं तव शरणं तव शरणं नित्य निरन्तर करे यज्ञ तो मार्ग दिखाकर स्थित प्रज्ञ तो नित्य निरन्तर करे यज्ञ तो मार्ग दिखाकर स्थित प्रज्ञ तो तपोवन की आशीषों से तपोवन की आशीषों से वसुंधरा भी धन्य हुई तपोवन की आशीषों से वसुंधरा भी धन्य हुई सरि ग गरि ग प प ग प नि नि प नि स स गरि सरि सनि सनि प ग नि प गरि सरि नमामि गुरुवर तव शरणं तव शरणं तव शरणं नमामि गुरुवर तव शरणं तव शरणं तव शरणं क्षमाशील तु गुणाशक्ति तु ज्ञानयोगी तु ज्ञानमूर्ति तु क्षमाशील तु गुणाशक्ति तु ज्ञानयोगी तु ज्ञानमूर्ति तु ही ईश्वर तू ही पूजा तू ही ईश्वर तू ही पूजा तुझको पाकर सफल तपस तू ही ईश्वर तू ही पूजा तुझको पाकर सफल तपस
పప గప నిని పని సస గరి సరి సరి సని పగని పగరి సరి నమామి గురువర తవ శరణం తవ శరణం తవ శరణం నమామి గురువర తవ శరణం తవ శరణం తవ శరణం सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आवो गुरुदेव दर्शन दीजो, आवो गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के दाता स्वामी, तुम हो जगत के दाता। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, आवो गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के दाता स्वामी, तुम हो जगत के दाता। तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, तुम हो शंकर रूपा स्वामी, तुम हो शंकर रूपा। सृष्टि स्थिति लय स्वरूप तुम हो, सृष्टि स्थिति लय स्वरूप तुम हो, तुम हो अनादि रूपा, तुम हो अनादि रूपा। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के दाता स्वामी, तुम हो जगत के दाता। अनाथ नाथ दीन बंधु, अनाथ नाथ दीन बंधु, तुम हो आनंद रूपा, तुम हो आनंद रूपा। अज्ञान नाशक शरण संरक्षक, अज्ञान नाशक शरण संरक्षक, आत्मज्ञान प्रदाता, आत्मज्ञान प्रदाता। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो, तुम हो जगत के दाता स्वामी, तुम हो जगत के दाता। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम